तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे हिंट्स क्या हैं? मेरे हिंट्स ये हैं कि डेटा इज वेरी लेस। ओके, ये एक हिंट है। सिंस डेटा, जब भी डेटा कम होगा किसी क्वेश्चन में, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि द क्वेश्चन विल टेस्ट यू ऑन बेसिक्स। ये उसका हिंट है कि बेसिक्स पे जाएगा। और अब आपको द हिंट will be given in the question paper, will be given in the question itself. This is a very standard uh, trick which is played. तो अब आपको हिंट ढूंढना है क्वेश्चन में। इसका मतलब है क्वेश्चन को माइक्रोस्कोप से पढ़ना है। अब क्या हिंट है क्वेश्चन में जो कि मुझे मिलता है? हिंट ये है, ड्राफ्ट will remain constant. Agreed? ये हिंट है। अब इससे मैं क्या इन्फर कर सकता हूं कि इफ ड्राफ्ट इज कांस्टेंट, मीन सिंकेज और आफ्टर इंटरेक्शन नहीं, अगर मैं उस दिशा में चला जाऊंगा जो आप सोच रहे हो कि मीन सिंकेज को चेंज ऑफ ट्रिम के साथ में कोरिलेट करूंगा, तो फिर मैं कन्वेंशनल डायरेक्शन में जा रहा हूं। फिर मैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं कर रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा वो। नहीं, अंडर वाटर वॉल्यूम इज द सेम। अगर मेरा ड्राफ्ट सेम है, दैट मीन्स माई अंडर वाटर वॉल्यूम इज सेम। if my underwater volume is same, underwater volume is what? W1 upon density 1 is equal to W2 upon density 2. But W2 is equal to W1 minus 360. डाल दो W1। इनिशियल डेंसिटी क्या थी? 1.025 1.025 फाइनल डेंसिटी क्या थी? 1 सॉल्व फॉर W। सर उसने फॉर्मूलाज में फंस के रह गए हम, तो मतलब सोच रहे थे उधर से ही कुछ होगा, तो वहां से तो कुछ भी नहीं हो पाया सर। वहां से कुछ हो ही नहीं सकता। ये तो काफी वहां सिंपल हो गया सर फिर तो सर ये 2 सेकंड में नहीं है सर, इतना आधे घंटे के क्वेश्चन हो रहे तो 2 मिनट में हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन के नंबर नहीं बताया आपको। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। सर छोड़ देंगे फिर। सर ऐसा क्वेश्चन भी नहीं चाहिए। छोड़ देंगे। सर V1 V2 से समझा देंगे। V1 V2 से समझा दूंगा। ओके, ड्राफ्ट इज द सेम। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका मतलब है मेरी अंडर वाटर वॉल्यूम इज द सेम। दैट मीन्स इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू द फाइनल वॉल्यूम बिकॉज ड्राफ्ट इज द सेम। सर आंसर 14760। या so what volume is displacement upon density? Displacement W2 is W1 minus 360 bunkers consumed.
बस कहानी खत्म, 3 लाइन में सॉल्व हो जाता है। तो जब ये क्वेश्चन, तो बेसिकली यू हैव टू गो बाय दिस इनिशियल 3 लाइंस, इन पे ध्यान दो। जब भी डेटा कम होगा तो बेसिक्स पे घुसना है, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी है, एंड हमारे कन्वेंशनल तरीके से नहीं जा सकते हम। ठीक है, सर इसमें ये मीन राइज इक्वल टू मीन सिंकेज भी तो करके निकाल सकते हैं सर। कर सकते हो, यू कैन डू इट, बट क्यों वो लंबा दिशा में जाएगा, बट ठीक है, उस तरीके से करके भी आप पहुंच सकते हो, कोई कोई वो नहीं है। और ये 2 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। पूरी की पूरी हिंडशिप ये 2 क्वेश्चंस पे टिकी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, find the hydro particulars of MV HINDSHIP at a hydrostatic draft of 5.60 meters. Hydrostatic draft of 5.60 meters in dock water density 1015. अच्छा, साइमल्टेनियसली क्वेश्चन नंबर 4 को भी पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, फाइंड आउट द हाइड्रोस्टैटिक पार्टिकुलर्स ऑफ MV HINDSHIP at a displacement of 12,200 in dock water density 1010. So 2 क्वेश्चन हैं, ड्राफ्ट इन डॉक वाटर, displacement in dock water. Okay. When my hydrostatic draft is 5.60 meters in 1015, so I don't have tables for 1015. I got tables for 1025 only. So with this draft 5.60, I go into 1025. Then I read the displacement. The displacement that I get is 11120. This is my displacement in salt water, because I have gone into 1025 tables. So W salt water is so much, but my vessel is floating in dock water. So therefore, I need my dock water displacement. How do I do it? I divide this 1.015. by 1.025 and multiply by 1015. And now I get my W dock water. So what have I done? I have converted W salt water to W dock water. And the reason why I have done this is because I have tables only for 1025. So my W dock water will come as equal to 11,011.5. This is my actual displacement of the vessel when I am floating in Haldia. This is my actual displacement when I am floating in Haldia. What is my draft at Haldia? My draft is 5.60.
So what is this? Dock water draft. So I enter with dock water draft, and the dock water draft is giving me a salt water displacement. Dock water draft is giving me salt water displacement. Simultaneously, if with this draft I enter and I find the TPC, the TPC will also be salt water. And I need to convert that to TPC dock water. How do I do that? Divide by 1025 multiplied by 1015. Simultaneously, if I read for 5.60 the MCTC, that will be MCTC salt water. I divide by 1025 multiplied by 1015. That will give me my MCTC in 1015 dock water. Rest of the values which have a unit in meter will not change. That means LCB unit is in meter, LCF unit is in meter, KB unit is in meter, KMT, KML all remain unchanged. Do not change. Why? Because their units are in meter. They remain constant. This is known as draft in dock water. This is one type of a question. Now I move to displacement in dock water. When I have a displacement in dock water, I don't have tables for 1010. I have tables for 1025. So what do? I enter by finding out the equivalent displacement. So W dock water is so much in 1010. What will be the equivalent displacement in salt water? So what do? W Divide dock by water. 010 and multiply with this. This will give me the equivalent displacement in salt water. And therefore, what am I doing? I am converting W dock water to W salt water, which is opposite of this. Here I was converting salt water to dock water. Here I am converting dock water to salt water. So if I give you the same question now, NV HINDSHIP is floating at a displacement of 11,011.5 tons in 1015. This is the displacement in 1015. Find out the hydroparticles. Find out the draft. So how do you do it? Convert this into an equivalent saltwater displacement. How do you do that? W dock water divided by 1015 multiplied by 1025. 11,011.5 divided by 1015 multiplied by 1025 will give me an equivalent saltwater displacement, which is equal to 11,1120. 11120 tons. This is my equivalent displacement in salt water. With this displacement, I enter into the tables. I will get a hydrostatic draft equal to 5.60 meters. Which density is this draft in? 1015. This is my dock water draft. So
salt water displacement is giving me dock water draft. Salt water displacement is giving me dock water draft. Same. That means if I enter into the table with salt water displacement, I will get the dock water draft. Conversely, if I enter into the table with dock water draft, I will get salt water displacement. Any doubts? Is this okay with everyone? Whatever I've done? So can you explain question fourth from W from yes from here? From here? Yes, sir. Okay. So यहाँ तक clear था ये वाला part? Yes, sir. Okay. So I'm following the same process for this question. I've extended question number 3 into question number 4. So the W dock water is what I've taken here. So supposing I give you MV HINDSHIP is floating at a displacement of 11,011.5 tons in dock water density 1015. Find the draft. How will you find it? So you are given displacement in Haldia. You want to find out the draft in Haldia. How will you find out? You will first divide by 1015 density Haldia multiplied by salt water density Chennai. Now you will get the salt water displacement equivalent. That means displacement at Chennai is equal to draft at Haldia. सर ये लास्ट वाला एक बार फिर से बताना सर, थोड़ा वो मिस हो गया उसमें. कौन सा वाला पार्ट? सर ये वाला हल्दिया वाला जो आप बता रहे थे, चेंज हो रहा है जो. Okay. This is my displacement in Haldia 1015. Yes sir. I want to find out my draft at Haldia. Okay sir. How do I do that? I don't have tables for 1015. So I find out the equivalent displacement of the equivalent saltwater displacement. So Haldia displacement divided by 1015 into 1025 ठीक है सर. will give me the equivalent displacement in salt water. जिसके corresponding draft ले लेंगे तो वो हल्दिया में जिसके corresponding मैं draft ले लूंगा. Okay. ये मेरा draft हल्दिया का draft होगा. सर सॉल्ट वाटर का भी मतलब वही होगा ना, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल, अंडर वाटर वॉल्यूम इज आल्सो इक्वल, तो सॉल्ट वाटर में भी वही होगा. अब मेरा टफ क्वेश्चन जो मैं आपको अब दे रहा हूं, बाउंसर क्वेश्चन. I want you to tell me how to find out the draft at Chennai. How will you find out the draft at Chennai? You have found out the draft at Haldia. तो डिस्प्लेसमेंट अच्छा नहीं सर, उसमें तो चेंज ऑफ डेंसिटी वाला जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन वो करेंगे ना फिर तो. नहीं, अभी उसको भूल जाओ. वो ए शेप का था, अब कहानी खत्म हो गई. उसको हटा दो, साइड में परे कर दो. अभी खाली इसको देखो और इससे सोचो. So displacement will remain constant. Okay, एक चीज. If saltwater displacement is giving me dock water draft, then converse also should be true. Dock water displacement should give me saltwater draft. सर चेन्नई में डायरेक्ट ले लेंगे सर डिस्प्लेसमेंट हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट. बिल्कुल ठीक. डायरेक्ट आएगा. बिल्कुल ठीक. This is also true. Converse. That means जो मेरी डिस्प्लेसमेंट डॉक वाटर है हल्दिया वाली ये थी.
इससे मैं टेबल में घुसता हूं तो मेरे को सॉल्ट वाटर ड्राफ्ट मिल जाएगा। यस और नो? यस सर, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट रहेगा। डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट रहेगा, बिल्कुल ठीक। हाँ सर, ये कॉन्सेप्ट बहुत यूज होता है हिंडशिप में, बहुत बार आता है, बार 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 बार। तो मोटे मोटी बात मेरी ये आ रही है कि मेरा जहाज 50,000 टनर है चेन्नई में, ये जहाज हल्दिया पहुंचा, डिस्प्लेसमेंट मेरी 50,000 ही रहेगी। डू यू एग्री ऑन दिस? डिस्प्लेसमेंट रिमेन्स कांस्टेंट। इज इट ओके? यस सर। I'll repeat my Yes, sir. sentence once. I'll repeat my sentence once again. I am at Chennai. My displacement is 50,000. I come to Haldia. My displacement is 50,000. Agreed? Why? Because displacement remains constant. Bhai, supposing, Sir, let me sir, just complete this. Let me complete this, first. Let me complete. Supposing my weight is 80 kilos. I jump into the water in Chennai. What is my weight? 80 kilos. Now I come out and I jump in Haldia in the water. What is my weight? 80 kilos. sir, but what about density, sir? Displacement is underwater volume into density. तो मेरा वहां पे भी 80 किलो था, यहाँ पे भी 80 किलो ही रहेगा। What will change is my draft Underwater displacement. and my underwater volume. Underwater volume will change. My underwater volume will change. So when I jump into the water, whatever was my draft at Chennai, when I come to Haldia and I jump into the water at Haldia, what will happen to my draft or my underwater volume? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा. So my underwater volume at Haldia will be more. My draft will be more. Why? Because the density is less. But my weight is 80 kilos only. Huh? So same funda, 50,000 tonner remains 50,000 tonner at both the places. But the draft at Haldia has got to be more than the draft at Chennai. Agreed? Yes. So coming back, draft at Haldia is 5.60. So draft at Chennai will be lesser than 5.60. Agreed? Yes. It will be lesser than 5.60. So it has to correspond to a lesser draft, means it has to correspond to a lesser displacement. The lesser displacement is 11,011. Yes, sir. ये समझ में आया कॉन्सेप्ट? Yes, sir. अब क्वेश्चंस पूछो. Now you ask me questions. Sir, in this question number 3, you said we are entering the tables with dog water draft for finding the displacement in salt water. How are we doing that? How is that? Dog water draft for entering table is just for the salt water. Because I do not have the tables for 1010 or 1015, whatever it is, the density. I don't have the tables for 1015. So how do I enter? So I will enter with whatever I have. 5.6 meters से मैं गया, उसका जो आया वो डिस्प्लेसमेंट मेरी सॉल्ट वाटर की डिस्प्लेसमेंट निकली, क्योंकि मैंने 1025 से निकाली है. So we are using this concept of equivalent displacement.
उस ड्राफ्ट पे इक्विवेलेंट डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, या इस डिस्प्लेसमेंट पे इक्विवेलेंट ड्राफ्ट क्या हो रहा है. सो ड्राफ्ट in dock water, displacement in the dock water. These are the two parameters how we are using them. So we use the concept of finding out the equivalent displacement. सर एक मतलब ऐसी टेक्निकल चीज पूछनी थी इसमें, जैसे कि मतलब जैसे हमने कर तो लिया, ऐसे करते हैं मतलब स्टार्टिंग से सिखाया है तो करते ही जा रहे हैं कि सॉल्ट वाटर डॉक वाटर से अगर चाहिए हो तो उसको कन्वर्ट इक्विवेलेंट वेट निकाल के. पर यहाँ पे सर हमारा हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट भी तो चेंज हो रहा होगा. जैसे अभी तो हमने जैसे 5.6 पे ले लिया और उसको कन्वर्ट कर दिया 1.025 के लिए, मतलब वो सॉल्ट वाटर का है तो सॉरी डॉक वाटर में चेंज कर दिया. पर उस टाइम पे सर ड्राफ्ट अलग होगा ना सर, सॉल्ट वाटर में भी अलग रहेगा और वो मतलब कंपनसेट कर लेता है मतलब चेंज इन ड्राफ्ट. The draft will not change at the pro rata rate of density. ओके सर. Because my vessel is not a uniform box. यस सर. So my water plane area is not remaining constant all the time. करेक्ट सर. I have a certain CB. यस सर. So because of that CB, I cannot linearly take the change of density as a ratio. हाँ सर. नहीं वो बात तो ठीक है सर. मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे अभी तो हमारे पास डॉक वाटर का हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट है इन 1.015 पे, और उसके करस्पॉन्डिंग हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला है जो कि है सॉल्ट वाटर में. पर सॉल्ट वाटर और डॉक वाटर में हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट तो डिफरेंट होगा ना सर. सॉल्ट वाटर फर्स्ट में क्वेश्चन 3 में सर, क्वेश्चन 3 में क्वेश्चन 3 में 5.6. ये जो 5.60 है, हाँ ये सर. मेरा डॉक वाटर ड्राफ्ट है, हाँ ये सर. सॉल्ट वाटर ड्राफ्ट नहीं है. हाँ डॉक वाटर ड्राफ्ट है, डॉक वाटर डेंसिटी है सर. इसमें जब हम टेबल से डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं तो उस टाइम पे सर 1.025 में तो हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट भी डिफरेंट होगा ना सर. 1.025 में हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट डिफरेंट होगा, लेकिन वो जो है मेरे को 11.5 पे मिलेगा, ना कि 11120 पे मिलेगा. मिलेगा. तो कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा जहाज हल्दिया से सेल किया तो हल्दिया पे मैं 5.60 पे हूँ. यस सर. जैसे ही मैं सैंडेड्स पे पहुंचूंगा बाहर सी वाटर में, यस सर. I will my draft will reduce. I will have a mean rise. It might become 5.4 or 5.3, whatever. यस सर. Right? So what is my displacement at Haldia is the question. The displacement at Haldia will be 11,011, which will correspond to a draft. Now that will give me my draft at Sandeds. ठीक हुआ सर. So 11,011 will give me my draft at Sandeds. 1120 is giving me my draft at Haldia, is the point which I'm making. And throughout this entire operation, my displacement is remaining constant. Please remember that. My displacement is not changing. What I'm doing is equivalent displacement.